Then come to the second point or the second phase. And here in the last phase, when we discuss the what is vegetation, natural vegetation, and the factors affecting natural vegetation. And there are two factors. These are the temperature and climatic condition that affect the natural vegetation. So this is the figure where we get the temperate zone. According to the temperature means here the earth is divided into 3 temperate zone. That is the torrid zone, heat zone, which is the torrid zone, and that's the temperate zone, and this third one is the cold zone. So in this particular torrid zone, especially at the near the equator, and we'll get more rainfall, and then it is being less, and then here it is less and less. So there is a little rainfall here we'll get, and also the temperature also get less and less, and here. So that, and here in this particular area, the trees will get the trees, tall trees, then the small trees here, and then we get the little ones here, that is the lichens and the other things. So the things are divided in this temperate zone. Accordingly, the temperate zone temperature affect the vegetation. So completely, and to come to the point, on the basis of the location and the type of climate condition, forest can be divided into 3 broad types, 3 types, and the total forest जो है 3 टाइप से डिवाइड होता है. पहला क्या है? ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, सेकंड मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज द टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. सो ये जो है ट्रॉपिकल हार्डवुड और द मेडिटेरियन टेम्परेट, ये सब कुछ क्या है? ये टेम्परेचर जोन, जो हीट जोन है, हीट जोन के हिसाब से ही एंड विल गेट ऑल दिस फॉरेस्ट, ये सब उस जगह पे ही मिलेगा. So that first come to the tropical hardwood forest. And what is the tropical hardwood forest? On the basis of temperature and rainfall, tropical hardwood forests are further subdivided into 2 groups. That is tropical evergreen forest and the tropical deciduous forest. And this particular tropical evergreen forest is also known as the tropical rainforest. And what it is? And these 2 things, it be tropical evergreen forest or the tropical deciduous forest, this is found especially in the torrid zone, the heat zone, equator, near the equator, and too much nearer the equator will get the tropical rainforest, and something far from the equator will get the tropical deciduous forest. जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है या फिर हीट ज़्यादा है, इस जगह पे हम लोग पाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड थोड़ा सा दूर जो है इक्वेटर से इस रीजन पे एंड टेम्परेट एंड टोरिड जोन के बीच में जो है विद इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड विल गेट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. सो दैट and first one is tropical evergreen forest, and question comes on why such forests are known as evergreen forest or it is the tropical rain forest. इसको क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन पे ही है, 0 to 23 डिग्री नॉर्थ से 0 to 23 डिग्री साउथ सर्किल पे है. सो दैट the tropical evergreen forest. These forests are also known as tropical rain forest. क्यों इसको tropical rain forest बोलते हैं? Because they are confined to tropical regions where heavy rainfall occurs throughout the year. ये इसलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है. ये जो रीजन है टोरिड जोन पे, इक्वेटर, नियर द इक्वेटर के पास पे, यहाँ ऑलवेज बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रीजन. ये है ट्रॉपिकल रीजन पे ही है ये ट्रॉपिकल रीजन एंड वेयर हैवी रेनफॉल ऑकर्स. ऑलवेज यहाँ हैवी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है थ्रू आउट देयर बर्ड्स तमाम सब, ऑलवेज इट इज रेनफॉल ऑकर्स. सो इट इज नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द according to the rain occur. And all the trees of this forest do not shed their leaves at the same time, so that ये फॉरेस्ट का जो ट्रीज हैं, ये ट्रीज का पत्ते जो हैं कभी भी एक साथ पत्ते गिरते नहीं इस ट्रीज से. सो दैट कहीं ना कहीं किसी ट्री पे एक साथ ट्री का कुछ लिप्स है, कुछ गिर रहा है, फिर नए ट्री लिप्स आ जा रहे हैं. सो दैट एक साथ गिरते नहीं, पतझड़ नहीं होता है. सो दैट ये इसमें क्या होता है, एंड द फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन. ये फॉरेस्ट के ट्रीज के जो पत्ते होते हैं ऑलवेज ग्रीन रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई सच फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट.
क्वेश्चन भी है इसका. एंड व्हाई दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट, where this is a tropical rain forest or this forest is known as the why it is known as the evergreen forest. evergreen forest इसको क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट यहाँ के जो ट्रीज हैं दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, सेम टाइप पे पत्ता गिरते नहीं है इस पर ट्रीज से. हैंस द ट्रीज ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड दैट इज व्हाई सच फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. And then they are spread in a area of every coast. कहाँ ये सब फॉरेस्ट दिखता है? ये सब रीजन जो है तो रीजन पे किस किस एरिया पे रीजन पे ये फॉरेस्ट दिखाई देते हैं. सो दैट द एवरी कोस्ट इट इज इन द एवरी कोस्ट घाना, एवरी कोस्ट घाना, नाइजीरिया, कैमरून एंड गैबन इन अफ्रीका. एंड इंडिया, इंडिया के कहाँ का मिलता है? इन इंडिया दे आर कॉमन इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, केरल एंड द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. हमारे देश के जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है वहाँ भी ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं और पाए जाते हैं. एंड देन द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर दिस फॉरेस्ट आर हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल. हैवी रेनफॉल होता है यहाँ. जो फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, आप पहले भी लास्ट पेज में पढ़े कि क्लाइमेट फैक्टर रहता है, affecting the factors which affect the vegetation or the natural vegetation, that is the climatic condition, the temperature and rainfall, that is the one of factors. These are the factors. So forests are heavy and heavy rainfall. These forests are heavy rainfall and well distributed rainfall here, and hot climate. Also this near the equator, as it is near the equator, it is obvious that it is clear that hot climate throughout the year is found there. So this is the region where this forest is named as the tropical rainforest and evergreen forest. So this is the climatic condition that make it in such the condition. Then on the hardwood trees, and which trees are found here, किस टाइप का ट्रीज मिलते हैं और क्या क्या ट्रीज यहाँ मिलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो दैट द हार्डवुड ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल. इसका साइज जो होता है बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. समटाइम्स ट्रीज अप टू 60 मीटर, 60 मीटर के होते हैं. एंड सेवरल स्पेसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड विद इन ए सिंगल एरिया. एंड दिस फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. बहुत घंस रहेगा, घना जंगल रहेगा यहाँ. एंड द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, बहुत ज़्यादा पत्ता रहेगा, ब्रॉड लीव्स, एंड टू परमिट ट्रांसपरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर, surplus moisture. So that some of the tropical trees are mahogany, ebony, rosewood, rubber and palm tree. These are the popular trees which are found in this particular evergreen forest, and you have to remember these names. Typical forest: mahogany, ebony, rosewood, rubber and palm. And then things the animals which were found here, and the animals found in rainforest are elephant, lemur, monkey and deer. So one word here, the permitted transpiration. What is transpiration? Transpiration is the emission of water vapors, water vapors, emission of water vapors from the leaves of plants. Plants के जो पत्ते होते हैं उससे water vapors निकल जाते हैं. अब कैसे ट्रांसपेरेंस होता है या वेपर्स फ्रॉम द लीव्स इमिशन होता है, इस इमिशन को ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. प्लांट के पत्ते के थ्रू जो ओवर वाटर ट्रीज के वो ट्रांसपिरेशन होता है या इमिशन होता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. सो इस पॉइंट पे आपको क्या क्या याद करना है, किस रीजन पे है. This forest is known as why it is known as the tropical rainforest. Second, why it is known as the evergreen forest. This is the most important question here. And second one is the regions where it is found. The Western Ghats, and in India, especially in the Western Ghats, Andaman and Nicobar, Kerala, and northeastern part of country, and the other parts of the other than India is Ghana, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroon and Gabon, Africa. Then the region climatic condition of this are the heavy well distributed rainfall, 200 centimeter rainfall at average, and hot climatic condition. This is the throughout the year occur here. And then third one is the trees found here, the important trees, the vegetation is the important trees found here, and tall trees,
and which are in dense dense forest. The tall trees with which is full of dense forest, full of tall trees. And this forest are characterized by dense growth of vegetation, that is dense forest, and trees have broad leaves. Transpiration, only for the transpiration the broad leaves are found. And then the famous trees are mahogany, ebony, rosewood, rubber, palm. And the animals found here are elephant, lemur, monkey and deer. Thank you. Come to the next page.